Good evening to all of you. All clear? Audible, visible? Namaskar, Girija, Anju, Somya, Varsha, Pranam, Varsha. Good evening, Pihu. केमती अछंती समस्ते? All good? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? All clear? Join କରିଗଲେ ସବୁ? Okay, ବଢିଆ. ହଉ କ'ଣ ପଢୁଥିଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍? What was the topic of discussion in last class? Role of RBI, roles and functions of RBI ଦେଖୁଥିଲେ ନା? ଏଇଆ ତ? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ. ଗୋଟେ minute. Now I can see the comments. Okay, functions of RBI and all last class topic of discussion थिला. आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहिबा हमर कैपिटल मार्केट मनी मार्केट ऊपर डिस्कशन आमे गत काल क्लास रे स्टार्ट करथिले. आज क्लास रे आमे देखिबा मनी मार्केट सॉरी कैपिटल मार्केट. नाउ जो फाइनेंशियल मार्केट देखुचे ये फाइनेंशियल मार्केट को दी भाग रे डिवाइड करा जाए. फाइनेंशियल मार्केट आको दी भाग रे डिवाइड करा जाए कोन ना मनी मार्केट आ गोटेला कैपिटल मार्केट. कौन कहली मनी मार्केट आ गोटे कैपिटल मार्केट. ना मनी मार्केट कौन आ कैपिटल मार्केट कौन ना ऑलरेडी यहाँ पर मध्य मु डिस्कशन करिछि. मनी मार्केट दिस इज द शॉर्ट टर्म मार्केट. मनी मार्केट इज द शॉर्ट टर्म मार्केट. कैपिटल मार्केट दिस इज द लॉन्ग टर्म मार्केट. लॉन्ग टर्म मार्केट को कहूचे आमे कैपिटल मार्केट. शॉर्ट टर्म मार्केट को कहूचे मनी मार्केट. फॉर एग्जांपल मन गोटे कंपनी ओपन अप करूचंती. गोटे कंपनी ओपन करूचंती तो कंपनी ओपन करूचंती लॉन्ग टर्म रे कैपिटल दरकार. लॉन्ग टर्म कैपिटल इन द सेंस को हिसाब रे कैपिटल दरकार. मु कहि प्लांट्स मशीनरी एगुडा गोटे गोटे लॉन्ग टर्म गोटे प्लांट करिवो जणे कि मशीनरीज एगुडा सब लॉन्ग टर्म. ना शॉर्ट टर्म रे मु कहली कि रॉ मटेरियल एंड ऑल एगुडा हला शॉर्ट टर्म. बुझिला शॉर्ट टर्म कौन कहली रॉ मटेरियल्स एंड ऑल एगुडा हला शॉर्ट टर्म रे. रॉ मटेरियल दरकार हला इलेक्ट्रिसिटी वेज पेमेंट. इलेक्ट्रिसिटी वेज पेमेंट ये सब गुडा हला शॉर्ट टर्म. तो सेति पई दी प्रकार रो मार्केट अछि. गोटे हला मनी मार्केट जहा कहूचे आ गोटे कहूचे हम कैपिटल मार्केट. तो कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म जनरली फॉर मोर देन 3 years and this is for money market is for less than 3 years. money market is for less than 3 years. In general view कथा कहूँ generally यह माना जाए. So capital market को आमे ठी कौन कहली capital market is the it is for long term and medium term funds. For long term and medium term funds को तीन भाग रे डिवाइड करा जाए. कौन डिवाइड करा जाए तीन भाग रे ना गोटेला सिक्योरिटी मार्केट DFI आ गोटेला FI. कौन कहली सिक्योरिटी मार्केट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज. फर्स्ट टाइम देखिबा सिक्योरिटी मार्केट कौन.
सिक्यूरिटी मार्केट बेसिकली डील्स विथ टू थिंग्स दीटा इंपोर्टेंट पॉइंट को ना काली भलिया काली जेमती आरबीआई कांसेप्ट पूरा क्लारिफाई करथिले हमें सिंपल भाषा रे बुझथिले आज मध्ये सेमती पूरा सिंपलीफाई करके कहबी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड किछि समय कंसंट्रेशन रखंतु एठी या परठू ये टॉपिक रे डाउट आसीबो कोन बिल किछि समय कंसंट्रेशन रखंतु या परठू ये टॉपिक रे डाउट आसीबोनी काहाको खाली मन देकी सुनंतु आधा घंटाटे सुनंतु मन देकी सो सिक्यूरिटी मार्केट बेसिकली डील्स विथ शेयर्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट व्हाट इज शेयर एंड व्हाट इज डेट इंस्ट्रूमेंट दीटा जिनस सहित ये डील करछि कहली गोटेला शेयर आ गोटेला डेट इंस्ट्रूमेंट ना व्हाट इज शेयर एंड व्हाट इज डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल मोटे कंपनी तयारी करिया को जाउछि एवं मनकर हम कहले गोटे कंपनी एटी तयारी करबा इकोनॉमिक्स प्राइवेट लिमिटेड इकोनॉमिक्स जे इकोनॉमिक्स रिलेटेड रिसर्च करिवो बा डेवलपमेंट करिवो जहा तो एटी हम देखिले कि मु कहली कंपनी रो कंप्लीट ओनर मु ही हेबी मते कहा को प्रॉफिट लॉस दबार नै बट जहा पैसा दरकार से सब मु लोन ने आसीबी से सब लोन ने आसी बजा को आलकना डेट बा लोन ने आसीबी ता बदल रे मु ताकू इंटरेस्ट पेमेंट करि देबी कोन करी ता बदल रे मु ताकू इंटरेस्ट पेमेंट कर देबी डेट रे ने आसीबी ता बदल रे ताकू इंटरेस्ट पेमेंट कर देबी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कहि देली कि एति की मते पेमेंट करिवार अछि एति की टंका पेमेंट करिवार अछि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रे मु पेमेंट कर देबी तो दिस इज कॉल्ड डेट इंस्ट्रूमेंट बा लोन सिंपली नाउ लोन रो मते को जदि मोर प्रॉफिट अधिक हुए ताले से लोन को बला कोन अधिक टंका देबी जहा लोन आनिथि बा जदि लॉस हो जाए मु कोन ताको ता पैसा रु काटि दे परिबी द आंसर इज एब्सोल्युटली नो आंसर इज एब्सोल्युटली नो सो मु लोन जहा टू आनिची ता से तो प्री एग्रीमेंट बा प्री कंडीशन जहा अछि से ही देबा पड़ियो अधिक जति कहि के आनिची सेति देई मोर प्रॉफिट अधिक हो बा मोर प्रॉफिट कम हो कोन कहली मोर प्रॉफिट अधिक हो बा मोर प्रॉफिट कम हो दैट डजंट मैटर मते सेति की ही पेमेंट करिवार अछि बुझियला कोन कहली मते सेति की ही ताको पेमेंट करिवार अछि हो तो ये गला कहा कथा ना डेट इंस्ट्रूमेंट रो कथा इन द सेम वे मु कहली प्रॉफिट लॉस रे मु भाग दे दे मोर सब ओनर होबार नाही सब पैसा मते नवार नाही मु प्रॉफिट आ लॉस रे भाग दे दे मन कर कोटी टंका खर्च हला मु डिवाइड कर देबी ताको 50 लाख रे मो सहित पार्टनरशिप कर जदि प्रॉफिट रु 50% भी नबो लॉस हेले तार भी 50% नबो कैपिटल लो भी 50% इन्वेस्टमेंट करियो मुझे तुम इन्वेस्टमेंट करियो 50% प्रॉफिट हेले नबो 50% लॉस हेले दबो 50% now this is called share এই कंडीशन रो कोन को दिस कंडीशन इज कॉल्ड शेयर बुझिला व्हाट इज शेयर शेयर कोन जानि हला शेयर कोन जानि हला एवं एठी एटा डेट इंस्ट्रूमेंट कोन जानि हला डेट इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली दिस इज सिंपली लोन शेयर टा इक्विटी शेयर हे पारे प्रेफरेंस शेयर हे पारे बा डेरिवेटिव हे पारे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर बा डेरिवेटिव हे पारे मु कहबी इक्विटी शेयर कोन प्रेफरेंस शेयर कोन डेरिवेटिव कोन कहबी एवं एटा डेट इंस्ट्रूमेंट ता दी भाग रे डिवाइडेड बॉन्ड हे पारे बा डिबेंचर हे पारे कोन कहली बॉन्ड हे पारे बा डिबेंचर हे पारे ताले शेयर और डेट इंस्ट्रूमेंट या भीतर डिफरेंस कोन हला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डेट इंस्ट्रूमेंट शेयर कोन और डेट इंस्ट्रूमेंट कोन ना शेयर रे इन्वेस्टर हैज शेयर इन कैपिटल एंड प्रॉफिट लॉस बुझेई सारी ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस ऊपर एवं कैपिटल ऊपर तुमरा शेयर अछि इन इन्वेस्टर हैज शेयर इन कैपिटल and in profit and loss now debt instrument there is no share so example hela kon yara na first example is bond second example is debenture now what is bond and what is debenture जेतो हम लोन नौचे तुम मते कहले सर लाख टका लोन दियो मु कहली ठीक अछि मु लाख टका लोन देबी बट आई नीड सम सिक्योरिटी मते लाख टका सोना दियो गोल्ड दियो तेबे मु लोन देबी अदरवाइज देबी कोन कि लाख टका गोल्ड दियो तेबे मु देबी अदरवाइज देबी नाही हैला नाउ दैट केस दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज जो मॉर्गेज थाए where there is a mortgage or where there is a security or surety that is called debenture now bond case re bond is unsecured ta mane bond re there is no mortgage kon कहली in case of bond there is no mortgage but in case of debenture there is mortgage बुझियला bond कोन और debenture कोन now are you clear what is bond and what is debenture yes or no simple कथा कहि सिंपल कथा कहली बॉन्ड कोन और डिबेंचर कोन बुझियला कि नै bonds are unsecured whereas debentures are secured कोन कहली बॉन्ड गुडा को unsecured and debentures are secured are you clear first point clear very good okay तापर आसी हम इक्विटी शेयर कोन और प्रेफरेंस शेयर कोन इक्विटी शेयर होल्डर किए नै कुछ कंपनी प्रॉफिट कला मु इक्विटी शेयर होल्डर मु प्रॉफिट पाइबी कंपनी लॉस कला मु लॉस पाइबी कोन कहली कंपनी प्रॉफिट कला मु प्रॉफिट पाइबी कंपनी लॉस कला मु लॉस पाइबी सो इक्विटी शेयर होल्डर्स दे रिसीव प्रॉफिट इफ कंपनी रिसीव प्रॉफिट and they
incurred loss if the company incurs loss. Now preference shareholder कौन? देखो these are that shares have entitlement to fixed amount of dividend. देखो जी fixed amount of dividend 5% हो 10% हो 20% हो fixed amount of dividend ये नहीं जी fixed amount of this is simply like your loan. कौन कहली? This is simply like loan. वर्षा को सर बैंक रे फिक्स बॉन्ड हुए जो से फिर तो लोन हुए हमारा कौन लिखছে এটা বুঝিও বুঝিলা তাহলে ইকুইটি শেয়ার জানিলা বন্ড ডিবেঞ্চর জানিলা না এবে দেখো ইকুইটি শেয়ার বুঝিয়ে গলা প্রিফরেন্স শেয়ার বুঝিলা ডেরিভেটিভ আগো কো আসিবো ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট রে বুঝিয়ে গলা বন্ড কোন ডিবেঞ্চর কোন তাহলে প্রথমে বুঝিলা শেয়ার কোন বন্ড কোন ডিবেঞ্চর কোন বা লোন ইনস্ট্রুমেন্ট বা ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট কোন এতি কি সমস্ত বুঝি পারলে ক্লিয়ার एवरीवन क्लियर আগো বুঝিবা তারপরে আমি আসিবা টাইপস অফ সিকিউরিটি মার্কেট ইজ দিস ক্লিয়ার টু অল সমস্ত বুঝি পারলে Is this clear? Yes, clear. Okay. So अबे देखिए हमें types of security market. First, depending on the fund raiser, किए fund raise करूची एई अनुसार जदि हमें देखिबा, it is classified into two parts. कौन? ना गोटे ला government security market, आ गोटे ला industrial security market. Government security market for government and semi-government security backed by RBI. Government security market कौन? The market by government and semi-government security which is backed by RBI. This is called government security market. Now industrial security market कौन? The market for securities of industrial and commercial organization. Market for securities of industrial and commercial organization. This is called industrial security market. Simple कथा. Now government security पाई हेले ताको जे government security market, industrial वा private पाई हेले ताको जे industrial security market. दीटा कथा और कुछ नहीं. तो ये जो गवर्नमेंट वालाटा को कहते हैं गिल्ट एज्ड मार्केट काहे कि ना बिकॉज देयर इज गवर्नमेंट बैकअप हैला और गिल्ट एज्ड मार्केट इज कॉल्ड ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कौन कहते गिल्ट एज्ड मार्केट को गिल्ट एज्ड मार्केट दिस इज कॉल्ड ऑफ द बेस्ट क्वालिटी नाउ डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इशू मींस सिंपल लैंग्वेज रे कहूची इशू अर्थ सेलिंग मु कहलिए पेनटा मु तुमको बिक्री कर देली सेल कर देली मु पेनटा मु तुमको इशू कर देली सेमती तो बॉन्ड डिवेंचर शेयर कथा आसे सेटा को बिक्री कर देबो कह जाय इशू कोन कहली ताको बिक्री कर देबो कहंदी इशू तो कोठी बिक्री होउची बा कोठी इशू होउची सेही अनुसार जदि हम देखिबा इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स कोन क्लासिफाई होउची ना फर्स्ट न्यू इशू मार्केट फर्स्ट इज न्यू इशू मार्केट सेकंड इज ओल्ड इशू मार्केट सो न्यू इशू मार्केट कोन ना फॉर सेल एंड परचेज ऑफ फ्रेश इशू न्यू इशू मार्केट कोठी कहूचे for sale and purchase of fresh issue. Now sale and purchase of issues already traded in new issue market. Could na old issue market. But first time पे company share issue करियो. कौन कहली? Company first time पे share issue करियो. कोड issue करियो ना new issue market रे issue करियो. Company second time पे करियो कोड करियो ना को करियो in the old issue market. कोडी ना करियो in old issue market. बुझियला? तले एटा हला this is depending on types of security market. This is depending on the issue or this is depending on the selling. Depending on selling. Now this one is depending on the fundraiser. Fundraiser means who is the fundraiser. एटी देखुछे कोन ना who is the fundraiser. Who is the fundraiser एई अनुसार हमें देखुछे ना कोन ना सिक्योरिटी मार्केट बुझियला एबे बुझियला Is this clear? Types of security market कौन कौन दी प्रकार सिक्यूरिटी मार्केट रो कथा कहली ना डाउट रहला जदी कहो अब बिट बाय बिट बुझौछ मत लागुनी डाउट रहउतियो बिट बाय बिट देखु चाह बुझिला कि ना इशू इन न्यू इशू मार्केट रो कथा देखिबा कौन कहली इशू इन न्यू इशू मार्केट दी भाग रे डिवाइड करा जाय को गोटेला पब्लिक इशू गोटेला अदर इशू पब्लिक इशू मींस टू पब्लिक जोटा कहा को इशू होची ना व्हिच इज इशूड टू पब्लिक कौन कहली जोटा इशू होची टू पब्लिक आ गोटेला अदर इशू नॉट टू पब्लिक बट टू क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पीपल टू क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पीपल
टू क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल हेले हमें कहते अदर इश्यूज एंड टू पब्लिक हेले हमें कहते पब्लिक इश्यू पब्लिक किए तुम्हें पब्लिक मु पब्लिक कहले हमें पब्लिक इश्यू आम व्यतीत जो क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल है देन दैट इज बैंक को है एम्प्लॉय मान को है से जगह से अदर इश्यू तो जो कंपनी फर्स्ट टाइम पे शेयर इश्यू कर व्हेन शेयर इश्यूड फॉर फर्स्ट टाइम शेयर इश्यूड फॉर फर्स्ट टाइम पे शेयर इश्यू होती कहते आईपीओ कौन कहली फर्स्ट टाइम पे शेयर इश्यू हेले कहते आईपीओ फर्स्ट टाइम पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फर्स्ट टाइम पर आफ्टर फर्स्ट टाइम जो गुड़ाक यूज हो आफ्टर फर्स्ट टाइम जो गुड़ाक यूज हो एफपीओ बा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग फॉलो ऑन ऑफरिंग्स फर्स्ट टाइम पर आफ्टर फर्स्ट टाइम जो गुड़ाक है कहले एफपीओ बुझीला आईपीओ कौन आ एफपीओ कौन ना डाउट अच्छी पूरा सिंपल किछि ना एथरे आईपीओ आ एफपीओ आईपीओ आ एफपीओ आईपीओ हला फर्स्ट टाइम जेतबेले इश्यू हला एफपीओ हला फर्स्ट टाइम पर सेकंड टाइम जेतबेले इश्यू हला दैट इज कॉल्ड एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग हला नेक्स्ट नाउ थर्ड वन प्राइवेट प्लेसमेंट रे कोन होय मु कहली तुमे पब्लिक मु पब्लिक आमे केते टंका मैक्सिमम केते टंका शेयर किनि परिबा 1000 2000 5000 10000 लक्ष 2 लक्ष 5 लक्ष 10 लक्ष 20 लक्ष कोटी 2 कोटी 10 कोटी 50 कोटी किनि परिबा बट कैन यू इन्वेस्ट 50000 करोड़ 50000 कोटी इन्वेस्टमेंट करि परिबा कि 10000 कोटी इन्वेस्टमेंट करि परिबा कि कैन यू इन्वेस्ट बिग अमाउंट 50000 कोटी लक्ष कोटी 3 लक्ष कोटी 10 लक्ष कोटी दीज अमाउंट्स वी कैन नॉट इन्वेस्ट तो याको को मान इन्वेस्ट करि परिबा ना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कि कहले क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स तो बोले क्यूआईबी लाइक एग्जांपल ना म्यूचुअल फंड कंपनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हमको स्टेट बैंक तो लक्ष कोटी दरकार स्टेट बैंक इन्वेस्टमेंट कर परबो तो यू कैन नॉट इन्वेस्ट आई कैन नॉट इन्वेस्ट तो एई मान को कहा जाय और दिस इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट कोन कहते एई इन्वेस्टमेंट को और एई प्लेसमेंट को एटा कोन कहते दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट बुझियला पब्लिक इशू रे नाउ दिस इज पब्लिक इशू ओवर public issue is over only public issue is over बुझी गला मत लागु छ तीनटा कथा कहली पब्लिक इश्यू रे आउ थरे कहूची आईपीओ एफपीओ प्राइवेट प्लेसमेंट आईपीओ कोन ना व्हेन द शेयर इज इश्यूड फॉर फर्स्ट टाइम दैट इज आईपीओ सेकंड फर्स्ट टाइम पर तो सेकंड टाइम इश्यूड दैट इज कॉल्ड एफपीओ जेतोले व्हेन इट इज issued to qualified institutional buyers like mutual fund companies scheduled commercial banks that is called private placement हम तीनटा पार्ट क्लियर समझतो आईपीओ कोन एफपीओ कोन आ शेड्यूल सॉरी प्राइवेट प्लेसमेंट कोन द नेक्स्ट इज टू द क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पीपल नेक्स्ट इज टू द क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पीपल मु कहली माने कर तुम बाहर गोटे कंपनी रो आईपीओ अछि माने कर तुम बाहर गोटे कंपनी रो आईपीओ अछि कंपनी एफपीओ आनिला तुम जो मैंने आईपीओ रखिच कहल कि मोर राइट एटा मो जेहेतु मु आईपीओ होल्डर मोर राइट सेटा कि मते एफपीओ मते दियो आउ का बाहर लोक दियो बुझीला मन कर दीटा प्लॉट अछि गोटे जगह दी गुंठ प्लॉट अछि तुमे गोटे गुंठ किनि देइछ सेकंड गुंठटा तो से बिकिया को अछि तुम कहतो मु तो फास्ट रखिच सेकंडटा भी मोर अधिकार मते दे दियो आ बाहर लोक दियो सिंपल कथा तो बाहर लोक यू आर सिंपली नॉट अलाउइंग आउटसाइडर्स तुम्हें कहते निजे रखिया पे दैट इज कॉल्ड राइट इश्यू राइट इश्यू मींस इश्यू ऑफ शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इश्यू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इश्यू करिवो दैट इज कॉल्ड राइट इश्यू बुझिला राइट इश्यू कोन मन कर मु गोटे शेयर होल्डर मो शेयर रे प्रॉफिट बा डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड हे जे मते दबार अछि 20000 टका कंपनी मु कंपनी की कहली कि मते 20000 दबार आवश्यकता नहीं कौन कहि कंपनी की मते 20000 दबार आवश्यकता नहीं मते 20000 टंका शेयर दे दियो त माने शेयर अगेंस्ट प्रॉफिट न्यू शेयर अगेंस्ट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड अगेंस्ट डिविडेंड अगेंस्ट जोटा पायो दैट इज कॉल्ड बोनस इश्यू कौन कहले देखो दैट इज कॉल्ड बोनस इश्यू आ गोटा जोटा ओन एम्प्लॉइज
ओन एम्प्लॉई मान बा डायरेक्टर मान जो शेयर टा दिया जाउछि दैट इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी इश्यू स्वेट माने झाड़ बहिटा हम कोन स्वेट स्वेटिंग ना झाड़ बही जो माने कष्ट करिसंते जो माने परिश्रम करचंते कंपनी पई जो माने कष्ट बा परिश्रम करचंते कंपनी पई से माने पाइबो कहले स्वेट इक्विटी इश्यू बुझियला स्वेट इक्विटी शेयर्स और स्वेट इक्विटी इश्यू क्लियर व्हाट इज स्वेट इक्विटी इश्यू बुझी तले 6टा पॉइंट क्लियर ना काहा को डाउट रहले जदि काहा को डाउट रहले 6टा पॉइंट तले कोन ये 6टा पॉइंट बुझियला ना नहीं डाउट रहला जदि पचार 6टा पॉइंट क्लियर समझते ना डाउट बुझीगला तो बढ़िया ताले इश्यू ता हमें समस्त बुझीगले कि इश्यू होउची केमते एबे आ गोटे टॉप पॉइंट को आसीबी कि इश्यू ता एक्जेक्टली हुए केमते जो इश्यू गुडा को देखिला हमें इश्यू ता हुए केमते गोटे कंपनी केते टंका इश्यू करि पर केते टंका मैक्सिमम शेयर नहीं परियो अबाउट अदर इश्यू माने नॉट टू पब्लिक जोटा पब्लिक को दिया जाए दैट इज अदर इश्यू तुम्हें पब्लिक मु पब्लिक नॉट टू अस दैट इज पब्लिक दैट इज अदर इश्यू हैला तुम पाखरे शेयर अछि ऑलरेडी आईपीओ अछि तुम कहले जे तुम पाखरे आईपीओ अछि मते दियो नेक्स्ट ऑफरिंग गुडा दैट राइट इश्यू बोनस इश्यू तुम पाखरे शेयर अछि तुम शेयर रो प्रॉफिट हला 5000 टका तुम कहले मते 5000 टका न देई की मते 5000 टका रो शेयर दे दियो दैट इज बोनस इश्यू स्वेट इक्विटी इश्यू जो माने झाड़ा बुआई परिश्रम करते कंपनी पई तांकू दिया गला स्वेट इक्विटी इश्यू एती कथा आ किछ नै वेरी सिंपल अंजू पीहू गिरिजा अर्णव सौम्य ताले बुझी गला समस्त ताले नेक्स्ट पॉइंट को जी इश्यू केमिति हुए केते टंका गोटे कंपनी इश्यू कर परियो मैक्सिमम मैक्सिमम अमाउंट इश्यू केते ही परियो मैक्सिमम अमाउंट इश्यूड केते ही परियो एटा कोन सा ना आज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ना कंपनी रो लॉ है ना is this a free YouTube class obviously have anyone paid before the class so they obviously free YouTube class maximum amount issued as per MOA ministry of sorry memorandum of association अनुसार memorandum of association ने लिखा है कंपनी केते टंका मैक्सिमम शेयर नहीं पर अदरवाइज you can take share a lot of money you can take बहुत टंका नहीं जो पब्लिक मनी and you can misuse it हां कि नहीं हैला so as per MOA maximum amount issued as per MOA this is called authorized capital this is called authorized capital so what is authorized is in the MOA that is authorized capital I want to know about unit integrity batch होची हमर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पई एटा प्रीलिम्स और मेंस पई अछि बिफोर प्रीलिम्स पाठ पढिबो प्रीलिम्स परे मेंस पाठ पढिबो बिफोर मेंस तो एक्चुअल अमाउंट एटा लाके ऑथराइज्ड कैपिटल लेट्स से गोटे कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल 10000 कोटी माने कर ऑथराइज्ड कैपिटल केते ना 10000 करोड़ लेट्स से now 10000 करोड़ एक्चुअली इश्यूड केते कंपनी तो सब इश्यू करबोनी एक्चुअली इश्यू केते लेट्स से एक्चुअली इश्यू होई 10000 कोटी रु 8000 कोटी दिस इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल कौन को एटा को दिस इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल बुझियला इश्यूड कैपिटल जति के टंका एक्चुअल अमाउंट इश्यूड बाय द इश्यूअर हैला ना एटा जति के इश्यू हैला सब गुडा को सब्सक्राइब माने किनिबे बोली किछ माने नै तुम इश्यू कंपनी इश्यू कर देला 8000 कोटी रो शेयर हे जाई पारे
पब्लिक 8000 कोटी अधिक शेयर पे पकई पारंती बा कम रो पे पकई पारंती एक्चुअल अमाउंट सब्सक्राइब्ड actual amount subscribed, this is called subscribed capital. मन कर सब्सक्राइब होला 6000 कोटी सब्सक्राइब माने एक्चुअली केते टका किनी हल यदि 8000 कोटी एटी सब्सक्राइब हेची एटी देखले सब्सक्राइब्ड कैपिटल सॉरी इश्यूड कैपिटल 8000 कोटी इश्यू होईची केते ना इश्यूड कैपिटल केते इश्यूड कैपिटल 8000 crore मु कोन कहली या टू कम रो सब्सक्रिप्शन हे पारे मन कर 6000 कोटी हे पारे बा या टू अधिक हे पारे 9000 कोटी हे पारे जब 6000 कोटी हे जीवो सब्सक्रिप्शन सेतोल कोन हो माने किछि एको कहजे अंडर सब्सक्रिप्शन जेटी सब्सक्रिप्शन होबा कथा ताटू कम हला कोन कहजे दिस इज कॉल्ड अंडर 9000 कोटी जेतला हो दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन दिस इज कॉल्ड 9000 कोटी हेला माने कहला हमें ओवर सब्सक्रिप्शन हैला 6000 कोटी कहला हमें अंडर सब्सक्रिप्शन इन दिस केस जोडा रेस्ट अमाउंट केते 2000 कोटी रेस्ट 2000 कोटी की नहीं जाए ना अंडर राइटर नहीं जाए कि नहीं जाए अंडर राइटर टेक्स अंडर राइटर नहीं जीवो कोन रेस्ट 2000 कोटी बुझिला अंडर राइटर किए ना जो माने एते टंका किनी परिबे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हे गला कोनोसी बैंक हे गला कोनोसी म्यूचुअल फंड कंपनी हे गला से माने अंडर राइटर हिसाब रे काम कर ना ओवर सब्सक्रिप्शन कोन हो कंपनी कौन करिवो ना 8000 कोटी सब्सक्रिप्शन में पकई छि बट 9000 कोटी सब्सक्रिप्शन हलानी तो कंपनी 1000 कोटी टंका जो माने एक्स्ट्रा मागी चंद काटिवो को बेसिस रे काटिवो को मानु काटिवो जो माने हाई इन्वेस्टर हाई वैल्यू इन्वेस्टर काटि दबो माने इंपोर्टेंस को माने को दिया जीवो ना इंपोर्टेंस विल बी गिवन टू लो वैल्यू इन्वेस्टर जे कम टंका पई पकोछि इंपोर्टेंस विल बी गिवन टू लो वैल्यू इन्वेस्टर तो सब्सक्राइब कैपिटल कौन बुझे गला क्लियर व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल so subscribed capital there is a portion of money which is demanded portion of money demanded portion of money demanded this is called यति कि demanded माने किए डिमांड कला it is demanded by this is demanded by the issuer जे इश्यू को जे शेयर इश्यू करछि से ही डिमांड कला so this is called जति की डिमांड कला that is called called up capital मन कर 6000 कोटी ये मागिले कि 4000 कोटी ना म दे दियो वर्तमान एटा कॉल्ड अप कैपिटल सो 4000 कोटी मागिले शेयर होल्डर सब दबो बोली किछि माने नाही सो एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर केते जति कि ताको कहा जाय मन कर 2000 कोटी एक्चुअली पेमेंट कला शेयर होल्डर दिस इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल रेस्ट जति की पेमेंट हेनी ताको कहा रिजर्व कैपिटल अनपेड अमाउंट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल अनपेड अमाउंट इज रिजर्व कैपिटल अनपेड अमाउंट जति की पेमेंट हेनी दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल ताले बुझिएला कि नहीं मते आको कोन दोइडी बुझिला कौन लिखिछ एडी विश्वगोपाल लिखिछ यू आर इन बैच सो वेदर नो बैच रे थिले दरकार नहीं जदि तुम बहुत दिन तळे पढिछ बा रिवीजन दरकार ताले ठीक আছে अदरवाइज नॉट प्रिपेयर्ड बैच रे तो ऑलरेडी पढाइछ ना सब पढाइछ ताले बुझिला ताले कौन कहली फास्ट कहली ऑथराइज्ड कैपिटल माने गोटे कंपनी मैक्सिमम केते टंका रो शेयर इश्यू करि परिबो so maximum share which can be issued is called authorized capital actually जति की इश्यू होई ता कहला हम issued capital सेथुर जति की सब्सक्राइब होला ता कहला हम कोन सब्सक्राइब्ड कैपिटल हैला portion of money demanded is called called up capital जति की डिमांड हैला actually paid by shareholder is called paid up capital unpaid amount is called reserve capital बुझी गेला
बुझेगा रिजर्व कैपिटल कौन तो ये जो फर्स्ट टाइम किना बिका हो गला तापर नेक्स्ट टाइम जो हबो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट और ओल्ड इश्यू मार्केट कौन कहली सेकेंड टाइम आफ्टर फर्स्ट टाइम सेल एंड परचेज नेक्स्ट जो हबो नेक्स्ट टाइम हबो कोट ना इन द सेकेंडरी मार्केट कौन कहली फर्स्ट टाइम पर नेक्स्ट जो हबो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट क्लास शेड्यूल 9 टा 10 टा एवरीडे 9 to 10 वर्षा सक्षम रे अछ ना जे बैच रे अछ से बैच रु सब नोट्स करू ना एटा को तुम रेफरेंस पे यूज करियो जदी करू है बैच रे जो नोट्स करियो तो सेकंड टाइम जो उठुए ताको कहला ओल्ड इश्यू मार्केट ना ओल्ड इश्यू मार्केट दी प्रकार गोटेला स्टॉक एक्सचेंज आ गोटेला ओवर द काउंटर एक्सचेंज कौन कहली गोटेला स्टॉक एक्सचेंज आ गोटेला ओवर द काउंटर एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज कौन एटी लिस्टेड सिक्यूरिटी गुडाकर किना बिका हुए एटी कहली लिस्टेड सिक्यूरिटी गुडाकर किना बिका हुए एटी अनलिस्टेड सिक्यूरिटी गुडाकर किना बिका हुए कौन कि ना एटी अनलिस्टेड सिक्यूरिटीज गुडाक किना बिका हुए ताले बुझेला ओल्ड इश्यू रे कोन होउची ओल्ड इश्यू रे कोन होउची ओके एती को बुझेला ओके एटी देखिए हमें ट्रेडिंग प्रोसेस केमिति ट्रेडिंग होउची ट्रेडिंग प्रोसेस कौन ना दी प्रकार गोटेला कैश ट्रेडिंग आ गोटेला फॉरवर्ड कैश ट्रेडिंग कौन जोटा कैश रो फॉरवर्ड ट्रेडिंग कैश ट्रेडिंग माने करंट प्राइस रे हुए एटा केतलो ना एटा करंट प्राइस रो तो एटा को प्राइस रो ना एटा फ्यूचर प्राइस रो फॉरवर्ड ट्रेडिंग टा कोथरे हो ना फॉरवर्ड ट्रेडिंग टा फ्यूचर प्राइस रे हो हैला फॉरवर्ड ट्रेडिंग फ्यूचर प्राइस फॉरवर्ड टा अगेन दी प्रकार गोटेला फ्यूचर गोटेला ऑप्शन गोटेला फ्यूचर गोटेला ऑप्शन गोटे मिनिट देख कौन कहले गोटेला फ्यूचर गोटेला ऑप्शन ना फ्यूचर कौन आ ऑप्शन कौन कौन कहली फॉरवर्ड ट्रेडिंग रे आमे दीटा कथा देखछे गोटे देखछे फ्यूचर आ गोटे देखछे ऑप्शन ना फ्यूचर रे सिंपल भाषा रे बुझौछ बुझा तुम कहले आज है 31 जनवरी आमे 3 मास परे फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे मास पई मन कर गोटे कर देले एग्रीमेंट तुम कहले सर मु ए पेन टा आपन किनिबी 20 टंका मु ठीक अछि 20 टंका किनियो होला
नाउ ए पेन रो प्राइस मे मासरे बढ़ू बा कम जदि तुमे मोटू किनिया को बाध्य एवं मु तुमको बिचिया को बाध्य देन दैट इज कॉल्ड फ्यूचर neither you have option to go away from agreement nor I have the option to go away from agreement you have to execute the agreement and I have to execute the agreement तुमे 20 टंका रे किनिबो कम बेसी हेई परिबोनी मु 20 टंका रे बिकिबी कम बेसी हेई परिबोनी दैट इज कॉल्ड फ्यूचर ओवर बुझिला फ्यूचर कोन फ्यूचर आउ थरे कहूची फ्यूचर डेट रे गोटे एग्रीमेंट हैला कोन कहले फ्यूचर डेट रे गोटे एग्रीमेंट हैला जो डेट रे हम कहले तुमे मोटू किनिबो मु तुमको बिकिबी बुझिला कोन कहले तुमे मोटू किनिबो मु तुमको बिकिबी ना तले एठी कोन देखु आमे now that case in that case that is called future future means both buyer and seller has to execute agreement both buyer and seller has to agreement दी जन को execute करिया पड़िबो agreement now एठी कोन हुए काहे कि आ गोटे ऑप्शन आसिला मन कर ये पेन रो प्राइस मे मासरे आमे एबेठू जनवरी 2026 रे कहले किना बिका हो मे मासरे मे 2026 को मन कर पेन रो प्राइस आमे कहिजे 20 टंका रे किना बिका हो पेन रो प्राइस कमी कि 15 टंका हे गला तुमे आ मोटू किनिबो कि तुमे आ मोटू किनिबो कि तुमे आ किनिबोनी मोटू तुमको अरे मत 15 टंका रे मिल जाउची मु काई किनिबी बा पेन रो प्राइस बढ़ी कि 25 टंका हे गला मु आ तुमको 20 टंका रे बिकिबी कि मु काई बिकी मत 5 टंका एक्स्ट्रा मिलिबो आ काउ दे दे तो एमतिया कंडीशन अराइज न करू सेति पय आ गोटे ऑप्शन अछि एठी देखो जे ऑप्शन ऑप्शन ने कोन अछि ना तुमे जदि चाहिबो एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करि पारो और यू कैन कम अवे फ्रॉम द एग्रीमेंट और यू कैन कम अवे फ्रॉम द एग्रीमेंट गोटे मिनिट बुझिलो कि नाही को हैला तले एठी बायर पई जदि ऑप्शन अछि बायर पई भी ऑप्शन अछि बायर बाहर को आसी परिबो सेलर पई जे बिक्री करछि सी भी चाहिले बायर कहयो मु एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करिबिनी सेलर भी चाहिले कहबो कि मु एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करिबिनी व्हेन इट इज गिवन टू बायर दिस इज कॉल्ड कॉल एग्रीमेंट and call option when it is given to buyer it is called call agreement call option when it is given to seller this is called put option call और put बुझिला बायर को हेले कॉल ऑप्शन सेलर को हेले पुट ऑप्शन एटा आसीबो क्वेश्चन बुझिला कि नहीं सो व्हेन इट इज गिवन टू बायर कॉल ऑप्शन व्हेन इट इज गिवन टू सेलर पुट ऑप्शन ताले एटी दीटा कथा कहली ट्रेडिंग प्रोसेस दी प्रकार गोटेला कैश ट्रेडिंग करंट प्राइस जहां सेइतरे किना बिका हो करंट प्राइस जहां अछि सेइतरे किना बिका हेले त कहला हम कैश ट्रेडिंग नाउ फॉरवर्ड ट्रेडिंग कोन फ्यूचर आजिका डेट रे डिसाइड हे जाउची कोन कहले हम आजिका डेट रे डिसाइड कर दबा बट किना बिका हो फ्यूचर डेट आजिका डेट रे प्राइस इज फिक्स्ड इन टुडे बट selling and purchasing selling and buying that will happen in future so एटी कहले गोटेला फ्यूचर गोटेला फॉरवर्ड बुझी गेला ताले तो फॉरवर्ड ता दी प्रकार गोटे कहले फ्यूचर गोटेला ऑप्शन ना फ्यूचर रे कोन होची ना बोथ बायर एंड सेलर यू हैव टू एग्जीक्यूट दी जन को एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करिया पड़ियो ना एठी यू कैन नॉट एग्जीक्यूट एठी ऑप्शन ने कोन हो ना यू हैव द ऑप्शन यू कैन कम आउट ना आरो ही जणा पड़े एज द नेम सजेस्ट यू कैन कम आउट बुझेला पुट ऑप्शन और बाय ऑप्शन सॉरी पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन पुट एंड कॉल ऑप्शन बुझी गला नो डाउट
जदि डाउट अछि पचार। आ गोटे डीएफआई डेवलपमेंट सिक्यूरिटी मार्केट ताले बुझी गला प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट दी प्रकार कथा कहली ना डीएफआई कोन ना माने 25 वर्ष रु अधिक पर्यंत लोन दियन मोर देन 50 इयर्स सॉरी 25 इयर्स रु अधिक लोन दियन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एमाने खाली लोन दियंतिनी ता सहित टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करि पारंती फिजिबिलिटी स्टडी करि पारंती सो अदर असिस्टेंस आल्सो गिवन बाय डीएफआई सो मोर देन 25 इयर्स हले तको हम कहले कोन डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गोटला एफआई बजा को फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज आ गोटे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज कौन ये ही पारंती आरबीआई रेगुलेटेड ये चारि प्रकार गोटे आरबीआई रेगुलेटेड गोटे सेबी रेगुलेटेड गोटे एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेटेड आ गोटे डीसीए डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेगुलेटेड एति चारि प्रकार तो चारि भाग रे एटा को हमें फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज को डिवाइड कले नो आरबीआई रेगुलेटेड के नाम को एसेट फाइनेंस कंपनी तुम एसेट किनिला बेले जे तुम फाइनेंस करछि दैट इज आरबीआई रेगुलेटेड सेबी रेगुलेटेड के ना वेंचर कैपिटल कंपनी जो गुडा को वेंचर कैपिटल कंपनी मन कर गोटे नुवा इन्वेस्टमेंट तुम नुवा स्टार्टअप स्टार्ट करूछो नुवा स्टार्टअप रे किए तुम पाखरे इन्वेस्टमेंट करिवो नुवा स्टार्टअप रे इन्वेस्टमेंट किए करिवो ना केही करिया को राजी हेबेनी सो जे तुम पाखरे इन्वेस्टमेंट करैला ताको कहबो वेंचर कैपिटल कंपनी नेशनल हाउसिंग बैंक एगुड़ा का हाउसिंग लोन जो गुड़ा दौरान से सब कौन कहल जी हाउसिंग लोन दौरान से सब ना डीसीए कौन ना डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स ये गला एफआई तो ये तीनटा जाक जो मिसी जीव सिक्यूरिटी मार्केट प्लस डीएफआई प्लस एफआई ताको हम कहया कैपिटल मार्केट तीनटा जाक मिसिले हम ताको कहले कैपिटल मार्केट ना कैपिटल मार्केट क्लियर मनी मार्केट ऊपर डिस्कशन गत काली क्लास रे करथि कैपिटल मार्केट क्लियर नॉन कन्वेंशनल एमएसएफ और एमएसएस एमएसएफ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएस है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम आ गोटे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इट इज क्लियर ताले बुझी गला कि नहीं मते कह केतरा क्वेश्चन खाली जो फर्स्ट टाइम पई शेयर आसले ताको कोन कोंदी फर्स्ट टाइम पई शेयर आसले ताको कोन कहबो फर्स्ट टाइम पे शेयर आसले तो कहबे आईपीओ सेकंड टाइम पे आसले कोन कहबो एफपीओ मन लगे नहीं फॉरवर्ड रे दी प्रकार ऑप्शन कथा कहली कौन कौन को ऑप्शन फॉरवर्ड रे दी प्रकार ऑप्शन कथा कहली कौन पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन कौन कहली पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन ठीक अच्छे ताले एतिकी पढ़ी के आस कौन पढ़िला आज क्लास रो मते कहलो टी कौन पढ़ी आज क्लास रे कौन शिखिल कैपिटल मार्केट है आईपीओ एफपीओ प्राइवेट प्लेसमेंट बुझुची कि नहीं
एगुड़ा सब देखले एगुड़ा सब शिखले फॉर फ्यूचर ऑप्शन पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन ये सब गुड़ाक आम देखले ठीक अच्छे बुझी हो इकोनॉमिक्स क्लैरिटी आसुची ना एबे भी डिफिकल्ट लगुच इकोनॉमिक्स बुझा पड़ुची ना एबे भी डिफिकल्ट लगुच very good evening you joined very late we're on the verge of getting the class closed we're on the verge of getting the class closed almost सब discussion सरी गलानी